हम जा रहे हैं बनाने अक्खा मसूर का पुलाव। तो ये थोड़ा गर्म पानी करके थोड़ा सी एक मुट्ठी दाल अक्खा मसूर, आधा किलो चावल ले लें, भिगा के रखें। और कड़ी पत्ता है, दालचीनी है, थोड़ा फूल है, थोड़ा जीरा है, इलायची छोटी, 2 लौंग है, काली मिर्ची, लहसुन है, थोड़ा सी अदरक है, 4-5 हरी मिर्ची, 3 टमाटर, थोड़ा सी गाजर, 1 कांदा, सब मसाला है। तो चालू करते हैं इसी चमची टमाटर चलिए मसाला हल्का सा डालेंगे। पानी तक गरम पानी चाहिए ऐसे करेंगे। चावल ऐसे थोड़ा पानी चाहिए। हरा टमाटर चावल थोड़ा सब्जी में गाजर कोथिंबीर हरा नमक सब थोड़ा जब चिंता में एक सीटी और देंगे, एक सीटी और ऐसे अक्खा मसूर दाल छोटा छोटा
गरम अच्छा लगा कुकर और पानी से अचार से या सैलेड से कैसे खा सकते हैं। ये चटनी डाल हल्का सा नहीं एकदम चिपका चिपका के डाला चावल वगैरह सब अच्छा निकल उसी बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी बना। जैसे भी फटाफट खाए अच्छा जैसे हमने वाला ऐसा बना के देखिए पसंद है तो लाइक कीजिए।